The revenue secretary of the Government of India. Of course, this building has its own trajectory of how it came to be. Although the presence of the CBDT is in J&K from 54, as was referred to by many of the speakers, it has had a very slow, although steady, all right, but slow progress in coming to its full form. Today, the occasion makes me feel very glad, and I first begin with the great sense of appreciation for the peace-loving people of J&K who have steadily kept their calm but grew along, and today they see the completion of this project, the dedication of this project for public service. And that is one of the reasons why I would play up not so much the tax collection, not so much what happens in direct taxation, but the point being that service to the taxpayer, service to people who would want to understand how things work. So there is also a Seva Kendra, I understand, attached to this building. It is that which I would play more importance on, because that's what is going to bring in the people's contact. Tell people about what it is all about, what happens to the money, whatever sum, big, small, which is collected, which goes to the development of this region. And therefore, the point that the Lieutenant Governor rightly emphasized, Bhagidari, people's participation gets a greater accent in that. So tax collection is not per se the important end product. It is more the engagement with the people, engagement to let this be a fact known to the people that every penny of what gets contributed, particularly when it comes to the indirect taxation, the CBIC chairman is here, the paisa which is collected through the GST, where the ordinary citizen, even if he's buying his bread or even if he's buying some of his essentials, soaps and oils and things like that, pays little amount towards the development of the state and the country. It is that which is very important for both the boards, both the CBDT and the CBIC, to engage with the people of Jammu and Kashmir. के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं, और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है, ये मां भवानी का प्रसाद है, और कलहर की राज तरंगड़ी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें द चिनार्स में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से संरचनात्मक सुधारों द्वारा आयकर व्यवस्था को मजबूत तथा पारदर्शी बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पारदर्शी
टैक्स सिस्टम तथा ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान देने की मुहिम को सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी टैक्स पेयर की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तथा ये कैमरा कोई खड़ा है। ओके मैडम बहुत पगला योकू बला में योकू